Hello friends, today we are going to know about the vector algebra, chapter number 2. In that vector algebra, vector quantity, we know that the vector quantity, what is the vector quantity? Vector word comes from the physics subject. So vector is like a physical quantity, okay? So according to the physics, any physical quantity, any physical quantity which requires to show the direction and value. Value means magnitude. Okay. Any physical quantity which requires direction as well as the value, that physical quantity is called the vector form. For example, अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है फोर्स. फोर्स ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी जिसको दर्शाने के लिए या जिसको बताने के लिए हमें रिक्वायर्ड द डायरेक्शन, ओके, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, एज वेल एज द वैल्यू कितना लग रहा है, देन इट विल बी द करेक्ट फोर्स, राइट? सो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ द सेकंड क्वांटिटी, physical quantity which is scalar. Any physical quantity, any physical quantity which requires only value, which requires only value. ठीक है, तो हम वैल्यू की बात करेंगे तो which requires only value. सो वैल्यू मीन्स व्हाट, कि उसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है which requires only the value form. Okay, that physical quantity is called the scalar. Scalar अगर मैथमेटिक्स में देखने जाए तो इट्स अ नंबर ओनली. ओके, बट अगर फिजिकल क्वांटिटी देखने जाए तो उसका एग्जांपल होगा स्पीड. अब स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कौन से डायरेक्शन में जाना है या कितनी स्पीड से जाना है, जस्ट स्पीड, कितनी स्पीड से जाना है, इट्स अ वैल्यू. दैट वैल्यू इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ओके, द वेक्टर क्वांटिटी need to show in two form. First is called two dimension, second is called three dimension. Two dimension means what? We know that two dimension, three dimension geometry form. So according to the geometry, we have in two dimension the x-axis and y-axis. We are going to write coordinates like this. Okay. Same way, the form vector, we in two dimension we have to write this one x1, this one will be x2. Okay. In three dimension it will be introduced like x1, x2, x3. Okay. वो कैसे थ्री डायमेंशन में लिखेंगे, x1, x2, x3, and here two dimension is x1, x2. But vector quantity shows and notation, its notation is called as, suppose it is a x, name is x, then it shows like a x bar or x arrow or x hat. Okay, about three of them we can uh, write vector by this or this or this form. Okay, you can choose, आप तीनों में से किसी एक फॉर्म में आप लिख सकते हो, which is called a vector form. So अगर मुझे ट्रू डायमेंशन में वेक्टर लिखना है, so x bar equals to x1, x2 in between comma. In three dimension, x bar equals to x1, x2, x3. This way we have to write. Okay, this is called a vector formation. Now in this vector formation, first of all we have to find the value of that vector. Suppose the vector which is called the magnitude. Magnitude means what? Modulus, or modulus means what? The value. Okay, so modulus or magnitude of vector. So modulus, suppose if it is a mod x bar and x bar is this x1, x2 in two dimension, so then the modulus of this is x1 square plus x2 square in under root. If it is in a three dimension,
अगर वो 3 डायमेंशन में है तो इट विल बी x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर. This way. Okay. This is called the magnitude of vector. Suppose example लेते हैं. We have suppose x bar equals to 1, 2, minus 3. Then mod of x bar according to the formula x1 square plus x2 square plus x3 square. So our x1 is 1, x2 is 2 square and x3 is minus 3 square. Okay. So 1 square is 1, 2 square is 4 and 3 square is 9. So 9 plus 4 is 13 plus 1 is under root 14. So this is called the magnitude or modulus or the value of x bar. Okay. This is the example of modulus of vector. Now vector, we know that our chapter name is vector algebra. So algebra means the addition, subtraction, multiplication will be happen. No operations, some operations are there. So vector addition. What is the addition and subtraction? So we have two things, addition and subtraction. Suppose we have x bar, x1, x2, x3. Y bar, y1, y2, y3. Okay. Then if we are going to add them, if we have to add both, then x bar equals to x1, x2, x3 plus y1, y2, y3. So that x1 plus y1, x2 plus y2 and x3 plus y3. According to the formation, we have to add them first with first, second with second and third with third. Now, same way it will be happen in the subtraction form. So this will be x1. I'm going to write directly x1 minus y1, comma x2 minus y2, comma x3 minus y. Okay, this way. Suppose example ही देख लेते हैं हम एक. और suppose a bar is 1, minus 1, 4. B bar 2, 4, 0. So just do it the operation a bar plus b bar. So for a bar plus b bar 1, minus 1, 4 plus b bar 2, 4, 0. So if we add them, so 1 plus 2, 1 plus 2, it will be 3. Minus 1 plus 4, it will be
3 again because of opposite sign, and 4 plus 0 it will be 4. So this is your vector quantity after the doing addition. Suppose we are having the a minus b, means a bar minus b bar. Same thing, 1 minus 1, 4 minus 2, 4, 0. So 1 minus 2, it will be minus 1, minus 1 minus 4, it will be minus 5, and 4 minus 0, it will be 4. So this is the subtraction of the vector form. 2 vector, 3 vector, you can do. हम इसका वेक्टर फॉर्म का 2 क्रॉस 2 मतलब 2 वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, 3 का भी कर सकते हैं, राइट. Then after the addition and subtraction, there is a mixed form that suppose if a bar equals to 1 minus 1 1, b bar equals to 3 0 1, and c bar equals to 2 3 3. Okay, then find the value a bar minus b plus 2c bar का modulus. So first of all, we have to find out the 3a bar minus 2 minus b bar plus 2c bar. So a bar we have, हमारे पास a bar b bar c bar है. So 3a bar का मतलब होता है a bar को 3 से multiply करना. So it is called a scalar multiplication. Okay, scalar multiplication. 3 into 1 it will be 3. 3 into minus 1 it will be minus 3. 3 into 1 again it will be 3. B bar is a single term. 2c bar. We require 2c bar. So 2 into c bar, which is 2 3 3. So 2 into 2 will be 4 6 6. So after that, after this, just हमें सीक्वेंस में रखना है 3a bar minus b bar plus 2c bar. So 3a bar is our 3 minus 3 3 minus b bar, it is 3 0 1 plus 2c bar is 4 6 6. Then subtract them. इसमें से इसको subtract करोगे तो 3 minus 3 it will be 0, minus 3 minus it is minus 3, 3 minus 1 it is 2, right? Then add them with the last one, 4 6 6, 4 6 6. Okay, so now add them. So 0 plus 4 it is 4, minus 3 plus 6 middle term, minus 3 plus 6 it will be 3, and 2 plus 6 it will be 8. Okay, this is the final vector form. Now we have to take the modulus of this vector. So 3a bar minus b bar plus 2c bar. So the vector quantity, we have the square root form. First vector x1 square plus x2 square plus x3 square. Okay, then x3 square. Okay, so this will be 4 square means 16,
16 प्लस 9 प्लस 64. So 16 plus 9, 25. 25 plus 64, it will be 89. Right? Square root 89. This is called a value of the given scalar quantities operation. Okay. Now the new topic is product of two vectors. In product of two vectors, multiplication of two vectors, we have two types: dot product and cross product. In this dot product and cross product, so suppose we have x bar, which is x1, x2, and y bar, y1, y2. Okay, which is in two dimension. So if we are doing the x bar dot y simple multiplication, x1, x2 dot y1, y2, then x1 into y1, x1, y1 plus x2, y2. This will be given you the simple form of the vector form, okay, scalar form. This is the dot product. Suppose x bar equals to हमने ले लिया है 1 2 1, थ्री डायमेंशन का हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन. टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन दोनों में सेम ही होगा, 3 2 3. So if it we are going to for the x bar dot y bar, so 1 2 1 dot 3 2 3. So 1 3 is a 3 प्लस बीच में क्या आएगा, 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3. So 3 plus 3 6 plus 4 which is 10. So ये देखो स्केलर फॉर्म आ गया. अब क्रॉस प्रोडक्ट कुछ अलग टाइप का है और इट विल एप्लीकेबल फॉर ओनली द थ्री डायमेंशन वेक्टर. अगर आपका वेक्टर थ्री डायमेंशन है तो ही वो एप्लीकेबल होगा. एंड खास बात ये है कि आपको रिटर्न में वो वेक्टर फॉर्म ही वापस देगा which is in different way, which is called IJK form only. ये x बार है, सपोज ये y बार है, y1 y2 y3 y1 y2 y3. तो x बार क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाता है क्रॉस फॉर्म में और डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन लिखा जाता है डॉट. So it will be I J K. सारे के सारे स्मॉल. फर्स्ट वेक्टर इज x1 x2 elements of first vector and second vector के elements y1 y2 y3. So हम जानते हैं डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है. दिस वे दैट I माइनस J प्लस K. डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके हमें आई जे के फॉर्म में लाना है. उसे बोलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर. अब रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट. उसका यूज कैसे करना है नोट करके ध्यान से रखना कि इफ x bar is perpendicular to y bar, if both are perpendicular to each other, then we have the we have one statement that x bar dot y bar will be zero always. अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंब परिपात है, then it will be the dot product of that vector will be the zero. ठीक है. अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे. सपोज मैंने एक वेक्टर ले लिया a bar 1 2 minus 1 and b bar r 3 4.
ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, देन इट विल बी द पी आर 3 4. Okay, we know that if a bar is perpendicular to b bar, we have that question that a bar is perpendicular to b bar, find value of r, find value of r. Okay, r की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है. So we know that if it both are perpendicular, then a bar perpendicular b bar, this implies that a bar dot b bar is always 0. So just multiply them 1 2 minus 1 dot r 3 4 equals to 0. So 1 r, 1 into r, it is r, plus 3 2 are 6, minus 1 into 4, it is minus 4, which is 0. Then 6 minus 4, it is 2, r plus 2 equals to 0. Then r will be minus 2, which is the value of r. Okay, this way you can find the value of r. Is it clear? Now we are going to see the application of, means use of the cross product. So first of all, the cross product is fine to multiply, that this way we can get, इसमें हमें वेक्टर फॉर्म ही वापस मिलेगा. बट उसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, ओके, उस वेक्टर का हमें एंगल प्रूव करना है. उस वेक्टर का हमें एंगल प्रूव करना है, दैट द वेक्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस. जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज सपोज if a bar equals to, if a bar equals to अगर हम इसकी बात करें तो ए बार हमें ऐसा कुछ लेना पड़ेगा और उसको प्रूव भी करना पड़ेगा. सो ए बार इक्वल्स टू, सपोज हम ले लेते हैं अब इसको ए बार को हम लिखते हैं, एक्चुअली ब्रैकेट फॉर्म में लिखने से बेटर है हम इसका आईजे के फॉर्म में लिखते हैं, और आई प्लस जे माइनस 2 के. और आई प्लस जे माइनस 2 के. एंड बी बार लिखते हैं दैट ए बार में थोड़ा सा चेंज करते हैं, दैट ए बार इक्वल्स टू, सपोज हमने ले लिया आई प्लस 2 जे. अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो मैंने जैसे बोला कि टू क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशन फॉर्म. तो अगर मैंने इसको 2 डायमेंशन ले भी लिया तो ये वैलिड नहीं करेगा. एंड बी बार इक्वल्स टू, सपोज दैट आई प्लस जे प्लस 3 के हमें ये दिया है.
Okay, we need to prove that the angle between two vectors, this two vectors is sine inverse. Angle between these two vectors is sine inverse root 46 upon 55. Okay, ये हमें prove करना है. So first of all, we need to find the formula of sine inverse. We know that the angle between two vectors, that by cross product sine theta, we have formula that x bar cross y bar mod x mod y ये होता है, और ऊपर x bar cross y bar का मॉड्यूलस. Okay, so here a bar and b bar is given, so our x bar and y bar के इंस्टेड में हम लेंगे a bar. So a bar को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 डायमेंशन में लिखना है, तो 1 2 एंड 0. उसका मॉड्यूलस हमें फाइंड करना होगा. सो मॉड्यूलस ऑफ a bar is 1 square plus 2 square plus 0 square. So it will be 1 plus 2 square is 1 plus 4, which is root 5, and b bar 1 square plus 1 square plus 3 square. So 1 square is 1 plus 1 plus 9, which is under root 11. Now according to the formula, we have to find the a cross b. So a cross b, we have the determinant form I j k 1 2 0, first vector, second vector 1 1 3. So हम इसको अगर solve करते हैं, so we have the value directly. We can get 3 2s are 6 minus 0 minus j bar, 3 1s are 3 minus 0 plus k bar, 1 1s are 1 minus 2. So it is 6i minus 3j, 1 minus 2 is minus k. Now according to the formula, we need to find a cross b modulus. So under root this, it will be 6 square plus minus 3 square plus minus 1 square. So 6 square, which is 36 plus 9 plus 1. 36 plus 9 is 45. 45 plus 1 is, which is 46. So now according to the theta sine inverse, our formula is like mod of a cross b upon mod of a mod of b. So according to the formula sine inverse modulus of a cross b, which is 46 upon root 5 root 11. And sine inverse root 46 upon root 5 into root 11, which is root 55. So we are going to just prove this, the angle between two vectors. It is sine inverse root 46 upon root 55. This types of question will ask in the 4 marks. So now in next video we are going to continue with the applications as well as the perpendicular form and unit vector perpendicular form of the vector quantity. So please like, share and subscribe my channel.